In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum to all of you. In today's video, we are going to study about how to make requests in English. इंग्लिश में रिक्वेस्ट कैसे की जाती है, उसको रिस्पॉन्ड कैसे किया जाता है, उसका आंसर कैसे दिया जाता है. Request means when you make a request, it means that you are going to say someone to do something for you in a very polite manner. Whenever the native speakers speak, they always try to sound more polite, and they become polite by using these expressions. जब कभी नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो अपनी रिक्वेस्ट में बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस को ज़ाहिर करते हैं. तो उस पोलाइटनेस को ज़ाहिर करने के लिए कुछ एक्सप्रेशंस हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनको वो यूज़ करते हैं. जैसे could you open, can you, would you mind opening, if you don't mind, could you, sorry to bother you, but could you, I really appreciate it if you could. So these are the structures which can be used in order to make your request more polite. Okay, let's start with the first one. अगर आपने किसी से रिक्वेस्ट करना हो कि वो दरवाजा खोल दे, तो आप किस तरह करोगे? Just like that. Could you open the door for me, please? Could you open the door for me, please? क्या मेरे लिए मेहरबानी करके दरवाजा खोल सकते हैं? अगर आप इस रिक्वेस्ट का गेसिंग आंसर देना चाहते हो, तो you can say yes of course, हाँ क्यों नहीं. You can also say okay. You can also say sure. You can also use can you in order to make a request. You can also use can you. Can you bring a glass of water for me, please? क्या मेहरबानी करके मेरे लिए पानी का एक गिलास ला सकते हो? तो अगर आपने हाँ में जवाब देना है, you can say certainly. Certainly, यकीनन. You can also make a request by using this structure. Would you mind? Would you mind opening the window for me, please? क्या मेहरबानी करके मेरे लिए खिड़की को खोल सकते हो? You are going to make this request. अगर आपने हाँ में जवाब देना है, you can say my prayer, absolutely, certainly, no problem. So you can respond in this way. You can also use another structure in order to make your request more polite. If you don't mind, अगर आपको बुरा ना लगे, could you shut the door? अगर आपको बुरा ना लगे कि आप ये दरवाजा बंद कर दोगे, तो you are going to make a request in this way. If you want to give the positive answer, you can say I'd be delighted to. I'd be delighted to. कि मुझे खुशी होगी. I'd be delighted. I'd be delighted to. I'd is the contraction of I would. I'd जो है वो I would की short form होती है. I'd be delighted to. मुझे ये करके खुशी होगी. You are given a positive answer. You can also make a request by using this structure. Sorry to bother you, but could you? Sorry to bother you, but could you stop making a noise? आपको तंग करने के लिए मात्र क्या आप शोर करना बंद करेंगे? आप कहीं बैठे हुए हैं और कोई आदमी है बहुत ज्यादा शोर किए जा रहा है और उसको आपने मना करना है कि यार शोर मत करो, तो you can use this structure. Sorry to bother you. Sorry to bother you. Could you stop? Could you stop making a noise? ठीक हो गया? या आपको अगर आपको माधुर आपको तंग करने के लिए, लेकिन क्या शोर करना बंद करेंगे? अगर वो कहता है पॉजिटिव आंसर देगा, तो यू विल से ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक हो गया? नेक्स्ट structure is I
I really appreciate it if you could. I really appreciate appreciate का मतलब होता है thankful कि I be very thankful to you, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ. I really appreciate it. I really appreciate it if you could make breakfast for me, please. मैं आपका शुक्रगुजार हूँ अगर आप मेरे लिए नाश्ता तैयार कर दो. अगर आपने हाँ में जवाब देना है तो you can say I'd be happy to. I would be happy to. कि मुझे ये करके खुशी होगी. ठीक हो गया? So these are the structures which can be used in order to make your request more polite. ठीक हो गया? It is clear to you? अगर आपने no में आंसर देना, yes में आंसर देना है, तो आप कह सकते हो yes of course, okay, sure, certainly, my prayer, I'd be delighted. Delighted means खुश होना है, happy. I'd be delighted to. Okay, I'd be happy to. ठीक हो गया? अगर आपने इनका नेगेटिव आंसर देना है, somebody makes a request, अगर कोई आपसे कोई रिक्वेस्ट करता है and you don't want to obey his request, you disagree with him, आप उससे इत्तेफाक नहीं करते या उसकी रिक्वेस्ट नहीं मानते, तो आप नेगेटिव में फिर कैसे आंसर दे सकते हो? तो नेगेटिव में भी आंसर देने के लिए आपको पोलाइटनेस ज़ाहिर करना होती है. ठीक हो गया? तो पोलाइटनेस को ज़ाहिर करने के लिए आप क्या कह सकते हो? I'm afraid I can't. I'm afraid I can't. American pronounce this word as can't. I can't. ठीक हो गया? But British say I can't. I'm afraid I can't. या आप ये भी कह सकते हो I'm sorry I can't. या I'm sorry I can't. तो आपसे कोई भी अगर कोई इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर यूज कर देता है और आप उसकी रिक्वेस्ट को नहीं मानते, तो आप बड़े ही पोलाइट मैनर में इनकार कर सकते हैं. ये जो I'm afraid यूज किया है हमने या I'm sorry यूज किया है, it shows politeness, it shows polite behavior. तो इनकार भी करना है तो आपने शाइस्ता अंदाज. I'm afraid I can't. Okay, for example, if somebody says to you, would you mind bringing a glass of water for me? आप कहते हो, आपने इनकार करना तो कैसे? I'm afraid, I can't, or I can't. Okay, you must remember that whenever you use this structure, would you mind? Would you mind? After would you mind, यानी कि would you mind के बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि वर्ब की चौथी फॉर्म, that is present participle. तो would you mind के बाद हम क्या यूज करते हैं? Present participle यूज किया जाता है. अगर somebody says to you, can you bring a glass of water for me, please? ठीक है, तो आपने इनकार कर दिया, तो आप कह सकते हो I'm sorry I can't, I'm sorry I can't, और I'm sorry I can't. I think you have understood this. तो आपको परेशान नहीं होना कि आपने ये सारी स्ट्रक्चर्स आपने याद करना है. आप इसमें से एक को जो भी आपको आसान लगती हैं, you better use them and better use them in your daily conversation. तो आपको एक दो स्ट्रक्चर आप याद कर लें, जैसे would you mind bringing a glass of water for me, would you mind helping me in this matter, okay, या can you or could you, any one or two structures can be used in your daily conversation, but you should have the idea कि हम ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं. ठीक हो गया? अब हमने क्या पढ़ा है? I'm going to conclude my lesson. तो हमने ये पढ़ा कि हम could you, can you, would you mind, if you don't mind, could you, sorry to bother you, but could you, I really appreciate it, but if you could. तो आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो. और आंसर कैसे दे सकते हैं? पॉजिटिव में अगर आपने आंसर देना है तो आप कह सकते हो yes of course, okay, sure, certainly, my prayer, I'd be delighted. अगर आपने नेगेटिव में आंसर देना है, you can say I'm afraid I can't, I'm sorry I can't, or I can't. So this is the end of this lesson today. I hope you must have enjoyed this video. Inshallah, see you in the next video. Allah Hafiz.